let me tell you one thing. Briefly, I'm going to tell what exactly last year question paper would look like. Yes, See, the last question paper, that means prior to you, there are two batches who have given the first year examination. For two batches, we have two patterns. That means for the batch that is right now in the third year, have answer type question pattern. That means they have only 8 to 10 questions, and all of those questions were 17 marks question. Yes, hardly 5 to 6 question you have to answer. In 5 to 6 question, the question marks in total were of 100, and in total you have to 18 to 20 marks question they were, and all those questions have to be answered in a optional way. Like for question number 1, you have one who are in the second year, BPM second year or BCA second year. For the first year question paper were purely MCQ. That means 100 questions they had for 1 marks MCQ. Understood? That's 100 are only MCQ. 100 was only MCQ. Yes, 100 questions they had for 1 marks MCQ, and you have to take mark. Now the thing is, if you get the MCQ, you might feel that it is easier for you to cheat, easier for you to guess the answer. But the thing is, you will never get the marking that you will have in the long answer type. Because when we have the long answer type, even teachers have set their mind that if the student got 48 or 49 marks, we can do it. 1 marks or half marks we can give somewhere and make it 50. But that cannot be done when you have the MCQ pattern. No, ma'am. I think in MCQ pattern, there our loss will be so many. That's what I'm telling you. That if you have the long answer type, like if you have 17 marks question, most probably you will be able to write at least 10 marks question. Yeah. If you are answering 10 marks, that means I can make it 10 and a half. And if I give 10 and a half in 2, I can make it 1 marks. So if someone is getting 49 or 48, I can make it 50. But that cannot happen if you have the MCQ pattern. It means if we do one mistake in MCQ, we will be lost 1 mark. You totally lost the 1 marks. You will not get half marks. You will not get any marks for that. Okay. So if you got MCQ and if you got 49 marks, it will remain 49. It will not turn into 50. All right. Also, those people who have chosen the English com or Hindi com, I will tell you what exactly that means. You know that it will purely describe your pattern as grammatical. Okay? आपका जो हिंदी कॉम का सेक्शन है या इंग्लिश कॉम का सेक्शन है, वो प्योरली आपका ग्रामेटिकल सेक्शन है. आपने जब 10th 11th में एग्जाम दिया था तो आपने वो क्वेश्चन पैटर्न देखा होगा. आपका सेक्शन ए रहता था कॉम्प्रिहेंशन का, सेक्शन बी रहता था ग्रामर का, एंड सेक्शन सी वाज योर लिटरेचर. सेम वे लिटरेचर इज योर 100 marks question, which 100 marks paper which you have already opted because you have learned that. The com, English com और हिंदी com which is going to come, उसमें आपका comprehension आएगा and grammatical part आएगा. Understood? Yeah. That goes behind, and if you have chose either one, if 100 marks Hindi or 50 marks Hindi and 50 marks English, both are correct. That there is no wrong answer for that. But if you are concerned about the क्वेश्चन पैटर्न आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है. सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग्स थोड़े डिफरेंट हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील लाइक यू डोंट नो द क्वेश्चंस. Just write down the questions and try to learn the words that are being represented. You will know that we have discussed each and every part that is going to come in the examination. Okay, even the question that are 17 marks, we have discussed it. Why I'm going to tell you the 17 marks question, how they come in 2 patterns. First, critical appreciation of the chapter. That means the whole chapter you have to write in detail, analyze each and every event that is going to happen. And the second one is they will give you a part of the chapter. वो आपको एक पैराग्राफ देंगे चैप्टर में से, ठीक है, और नहीं उसके अलावा आपको एक्सप्लेन करना होगा. The thing is, when you are going to answer this question, most of the students do what? The exact paragraph that has been written there, they will explain that only. No, that's not how you answer that. You have to first describe from which chapter it has been extracted, who is the writer of this chapter or that poem. Third, you have to start from the beginning.
That means briefly let's take आपका नाइटिंगेल से 2 पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया, तो आपको सिर्फ वो 2 पैराग्राफ्स का मीनिंग नहीं बताना है, आपको उससे पहले का ब्रीफिंग भी देना है, दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड प्रायर टू दैट paragraphs and after that paragraphs, because only one question will come, one long question will come for one chapter, okay, and it will be optional. For example, nightingale के साथ उन्होंने वेस्ट विंड का और में कर दिया है, दोनों में से कोई एक ही आंसर करना है आपको, तो that means you are answering only one question from one chapter, so you have to write each and everything that you remember from the chapter. Understood? समझ में आ गया कैसे आंसर करना है? Also, अगर आपका चैप्टर में से फॉर एग्जांपल कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का एक पोर्शन निकाल के आपको दिया गया है और वो पोर्शन एकदम एंडिंग वाला पोर्शन है, व्हेन न्यूनस वाज एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द वैली एंड ही टर्न्ड एंड लुक बैक टू द वैली, ठीक है, जब वो दूसरी बार बाहर चला गया था और वो वापस टर्न करके देखता है वैली की तरफ, वो सीन डिस्क्राइब किया गया है. दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरी इवेंट दैट हैज हैपेंड. Major events, not every event, major events that happen. What exactly major events happen? Where is the country of the blind? How did it turn into the country of the blind? How did Yunus get into that position or that area? And what exactly happened after Yunus was residing in the country of the blind? And why did it turn back to the outside of the country of the blind? Understood? That means you have to basically write the summary of major importance events that are happening in the chapter. Understood? अब कोई डाउट है किसी को लास्ट ईयर क्वेश्चन में से? Summarize. Sorry? Summarize. What summarize? Like paragraph that you have to summarize. Summarization will not come because this question answer would coming for 17 or 20 marks. So summarization means that what exactly that you feel, you write it in short version. Short version will not be happening na? If your answer is 17 marks or 20 marks, you won't have to write it in a short version, right? Even if you write the longer version, अगर आप किसी भी चैप्टर का समरी लॉन्गर वर्जन में लिखते भी हैं तो आप पूरा चैप्टर तो नहीं लिख पाओगे ना, आप उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही लिखोगे, एंड दैट एग्जैक्टली दे वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर. Said like she gets some paragraphs and then said you have to give the title of the story. नहीं, they will not say this, they will just exactly write the question, explain the lines that are given here. Not Question chapter, ma'am, outside of chapter. Outside of the chapter? No. Acha, comprehension. Yes, comprehension. They will give a paragraph. They will give. You have to read the paragraph, and according to the paragraph, they will ask the question. They also said you have to give the title of the story. Yeah, these kind of question comes in your paragraph. Comprehension passage सबने किया है ना? तो उस तरह के question आते हैं. Which of the major idea is being discussed in the comprehension passage? Give a title, proper title to the comprehension passage. What are the ideas that are described by the writer? ये सारी चीजें आपका आएंगे, इसी तरह का आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है? Any other doubt? No. Then let's move ahead with the chapter. What was the last point that we discussed here? Maintain one copy. No, actually. Don't make a khichdi out of every subject. Not a copy. Actually, I was forgetting. Yes, anybody has the notebook that we were pursuing? What was the last point that I have dictated to you? Everyone is keep on turning the pages. Nobody is telling me one answer. There is still nothing that he celebrating. When exactly you are reading, then also you are going to have to say this. There's something like this. What was the point? Okay, manifestation of spirits. After that, we have described something. Okay, have I dictated the point where he describes what is the definition of this God? No. Write down. No, ma'am. I think you shared it.
I described it, but I won't have dictated it. I would have described it in the last class itself. Yes, you need to open the notebooks, take a pen outside and then start writing. Okay. Yes, write down the points. According to Nehruji, according to Nehruji, according to Nehruji, his idea of a god, according to Nehruji, his idea of a god, last bench, put on sleep. Yes. Take out your notebook, start writing. The idea of his god. Take a note from someone else. Yes, according to Nehruji, his idea of a god is not similar. If his idea of a god is not similar, his idea of a god is not similar from the one that we think, similar. His idea of a god is not similar to the one that we think, but to the one from the one is similar. The meaning that you are trying to convey has the similar effect here. Okay? That we think, from the one that we think. You might want to keep your mouth shut. Yes. Full stop. After that, write the next line, continuation. His idea of God, his idea of God is a natural force, is a natural force that governs yes, governs, that governs, governs the natural balance of the universe. The natural balance of the universe. A natural force that governs the natural balance of the universe. Completed the point? Did you understand the point? Yes, ma'am. Anybody who didn't understand the point? सिंपल वर्ड्स में नेहरू जी ने ये बताया है कि हम किसी एक पर्सन को या किसी एक डीटी को प्रे करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, राइट? We pray to gods who has name, who has face, who has gender, right? According to him, the God does not exist in any form. According to him, God is only a natural force that exists in the universe, that only and only is concerned with the natural balance created for the maintenance of the universe. Okay, how your solar system is governed, how your universe, Milky Way galaxy is governed, how exactly every other celestial body is governed, the maintaining of that force and
गवर्न्स का मतलब कि वो उसे देखता है, मेंटेन करता है, किस तरह उसको बैलेंस को रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, राइट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है। उसी फोर्स के, सिमिलर फोर्स के कारण किसी भी बॉडी में वो हमारे मेंटेन करके रखे, ठीक है। उनका काम सिर्फ पर यूनिवर्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीज जो हमारे नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है, कोई ऐसी चीज जो हमारे गैलेक्सी को या हमारे यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकती है, उसके अलावा गॉड एक ऐसी नेचुरल फोर्स है जो किसी और चीज से कंसर्न नहीं रखता। वो हमने दे दिया है कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी थिंक दैट देयर इज सम डीटी और सम one present above us, some supreme power present above us who maintains our own good and bad behavior, who gives us the fruitful result of our good and bad behavior. लेकिन ये रिजल्ट जो आपको मिलता है ये गॉड की वजह से नहीं मिलता है, ये रिजल्ट आपके अपने कॉजेस की वजह से मिलता है। Whatever you do in life has a consequence, consequence or whether it is a bad consequence. Now people usually ask to you that why exactly your doing can add up to your parents doing, आपके जो कर्म है वो आपके माता पिता के कर्मों से कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि यही चीज हमें बचपन से सिखाई गई है, राइट। इसका लॉजिकल थिंग सोचिए, whenever जो हमारा रिपल होता है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, वो आप एक वाटर बॉडी से ज्यादा अच्छे से कहीं और नहीं समझ सकते। आप अगर कोई एक पॉन्ड में पत्थर फेंकेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि पॉन्ड का कोई ऐसा एरिया अनइफेक्टेड रहेगा जहां पर वो वेव्स नहीं जाएंगी? नहीं, जहां तक वो पॉन्ड है चाहे इतनी छोटी सी भी इफेक्ट हो, लेकिन वो इफेक्ट आपको एट द एंड तक दिखता है कि नहीं दिखता है? आप अगर छोटा पत्थर भी उसमें डालते हैं तो भी आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो वेव्स हैं वो एट द एंड ऑफ द वाटर बॉडी तक जाती है। सेम वे व्हाटएवर गुड डीड्स यू आर डूइंग, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम इन द सेंस आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब ले रहे हैं, आप अच्छे से अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, तो इससे आपके पेरेंट्स का कर्म कैसे जुड़ा? क्योंकि उन्होंने आपको अच्छा बनाया ना। जब तक आप जॉब नहीं कर रहे थे तब तक कौन पाल रहा था आपको? आपके पेरेंट्स पाल रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के कर्मों का फल है ना कि आप अच्छे बने, आप उनका ख्याल रख रहे हैं, और ये आपके कर्मों का ही फल होगा ना कि वो आपको अच्छा बेटा समझते हैं, राइट। So basically it is all interdependent. It is not something that you do will be fruitful for them. Indirectly it is fruitful, not directly. It is not counted in their work, it is always counted in your work, but the consequences are shown everywhere. आपके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं काम करने का, जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन उस कर्म का जो एग्जैक्ट आपका जो एक कॉज रहेगा वो कॉज आप ही हैं, वो कॉज कोई और नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। Nehruji mentions Gandhiji in the next paragraph. Yes, Nehruji mentions Gandhiji in the next paragraph. Capital G, बच्चे please. Capital N and capital G. Yes. Nehruji mentions Gandhiji in the next paragraph. According to him, comma देखिए लिखेगा, according to him,
no one in his lifetime, no one in his lifetime, no one in his lifetime had stressed the right means, had stressed the right means, Right. means, 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 right means is important, stressed the right means is important, stressed the right means is important, as much as Gandhiji had done, as much as Gandhiji had done, as much as Gandhiji has done. Full stop. Most of the people are concerned, most of the people are concerned, most of the people are concerned for achieving their goals, for achieving their goals, for achieving their goals, for achieving their goals, rather than the right means or the right means or the right path, the right means or the right path, the right means or the right path to achieve it, achieve it, the right means or the right path to achieve it. Understand this point here, what exactly Nehru is trying to say. In his lifetime, that means by the time that he was writing this Discovery of India portion, all this lifestyle, he has never seen any other person concentrated or stressing the more importance of the means. Means आप किस तरीके से अपना गोल अचीव कर रहे हैं, इस रास्ते पे, पाथ पे किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस, गांधी जी ने जितना स्ट्रेस दिया उतना स्ट्रेस किसी और ने नहीं दिया. Because most of the people are much more concerned in getting the actual goal that they want to have set. ठीक है, उन्होंने लाइफ में जो गोल सेट किए हैं उनको अचीव करने में उनका ध्यान ज्यादा रहता है, rather than actually taking the right path. अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर किसी पर्सन को राजा बनना है, ठीक है, तो राजा बनने के लिए क्या चाहिए? मनी. पहले तो ये बताओ राजा तुम कब बन सकते हो? अभी बन सकते हो राजा? तो ये पहले की बात हो रही है, और उस टाइम आपके लिए पैसा कुछ भी नहीं था अगर आप राजा बनना चाहते हो. Yes, they wanted allies. ठीक है, सबसे पहले आपके पास allies होने चाहिए, सपोर्टर्स होने चाहिए. यानी कि अगर एक बहुत बड़ा किंगडम है, उसके अंडर भी सब डिविजन्स होते हैं जिसको हम मंत्री कहते हैं, जो एक एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है. वो मंत्री अगर आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, आप राजा नहीं बन सकते हैं, तो आपको एलाइज चाहिए. ठीक है, आपको सपोर्टर्स चाहिए. सेकेंड थिंग दैट यू रिक्वायर्ड इज इफ यू आर नॉट बाय बर्थ द राइटफुल हेयर. आपको पता है किंगडमाइजेशन कैसे होता है, अगर एक राजा का बेटा है तो उसी को हम क्राउन देंगे. तो अगर आप राइट हेयर नहीं है, यानी कि आप उस राजा के बेटे नहीं हैं या पहले बेटे नहीं हैं, तो आपको उससे युद्ध करना होगा. ठीक है, इफ यू वांट टू हैव दैट पोजीशन दैट इज राइटफुली बाय बर्थ हिज, देन यू हैव टू फाइट फॉर दैट. आपको कॉम्बैट करना पड़ेगा उसके साथ. नाउ आफ्टर दैट आप अगर ये सारा पाथ लेते हैं, यानी कि आपने क्या किया, आपने एलाइज बनाए. नाउ द थिंग इज, आपको पता है कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए. सबसे पहला आपके पास एलाइज होनी चाहिए, दूसरा आपको कॉम्बैट जीतना है उस पर्सन से जो कि राइटफुली हेयर है आपके थ्रोन का. यस,
allies means supporters. ये दो अचीवमेंट्स हैं आपके, ये दो गोल्स हैं, लेकिन इसको अचीव करने के रास्ते अलग अलग हैं, राइट? One way is the right path. Which is the right path? To actually find the supporters by doing something good for them. अगर आपने राजा ना होने के बावजूद उन लोगों के लिए अच्छा किया है तो वो आपके अलाइज हैं, वो आपके सपोर्टर बनेंगे, राइट? गलत रास्ता क्या हो सकता है? अलाइज के फाइंड करने के लिए आपका गलत रास्ता क्या हो सकता है? Forcefully, yes. They will corrupt you or they will forcefully make you their allies. वो डराएंगे आपको कि अगर आपने हमें राजा नहीं बनाया तो हम आपके राज्य में परेशानी क्रिएट करेंगे. Understood? This is the wrong way. Now the thing is, most people are getting their allies or their goals. जो भी achievement उन्होंने लाइफ में करनी है, उन्होंने वो अचीवमेंट को माइलस्टोन तो बना लिया, लेकिन किस रास्ते से हम उस माइलस्टोन पर जा रहे हैं उन्होंने वो चीज नहीं सोची. ठीक है? इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग एंड डूइंग समथिंग गुड फॉर द पीपल सो दैट वो फ्रीली अपना सपोर्ट तुम्हें दे, आपने गलत रास्ता अगर अपनाया तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये लोग नहीं सोचते हैं कि आपने अगर उन्हें डरा धमका के अभी अलायंस बना दिया, कल को होके वो आप ही को मरवा देंगे. अगर आप राजा बने तो मंत्री का साथ ही ना आप राज कर सकते हैं, आप उनके बिना तो राज नहीं कर सकते हो, राइट? अगर आप मंत्री चेंज भी कर देते हो तो वो लोग जो मंत्री थे वो तो वहीं रहेंगे ना, उनको आप बाहर तो नहीं निकाल दोगे. और अगर आपने ऐसा किया तो जो कॉमन जनता है वो समझ जाएगी कि आप यहाँ पर अपने अलायंस बैठाना चाह रहे हैं, वो आपका पूरा रिवोल्ट कर देगी. दैट मीन्स व्हाट? नो मैटर हाउ मेनी पाथ दैट यू टेक, नो मैटर हाउ क्विकली यू अचीव योर गोल्स, अगर आपने रास्ता सही नहीं चुना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा गलत ही होंगे. अंडरस्टूड? सॉरी, it might be, there are numerous examples actually, there are numerous examples. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका किंगडम फॉल किया है इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने गलत लोगों के साथ, सपोर्टर्स के साथ मिलकर राज्य बनाने की कोशिश की. The thing is that if you don't do good with someone, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली इन द किंगडमाइजेशन, इन डिक्टेटरशिप, इन रेजिमेंटेशन, इस तरह की गवर्नमेंट्स में क्या होता है, अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे तो लोग कुछ साल के लिए नहीं कुछ करेंगे, 10 साल हो सक जाएगा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से कोई अगर एक भी ऐसा हो जाए जो रिवोल्ट करना चाहे तो वो 1,000 को अपने साथ लेके रिवोल्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ हो, कितने भी हथियार हो, आप 1000 लोगों से एक नहीं लड़ सकते. अंडरस्टूड? No matter how many allies you have, ये चीज हमने हिस्ट्री में 1000 बार देखी है. आप अगर हिस्ट्री किंगडमाइजेशन की देखेंगे, आपने 1000 बार ऐसे राजाओं को हारते हुए देखा है जिनका सपोर्टर्स नहीं है. All people are hating, but are the Russians hating him? No, ma'am. How many? Only India. Lots of how many? Do you know the population of Russia? Let's take a small example. In your own class, if one is made the monitor or the representative of the class, if nobody likes, who are you going to complain? You're going to complain the teacher. You are going to complain the teacher. But what is exactly the teacher is going to do? They will ask each and every student whom they support. Now, if we get the vote to that person, will we ever change the representatives? वोट अगर हमें मिलेगा तभी तो हम कुछ कर सकेंगे ना. That's exactly what I'm telling. कि अगर आप 1000 नहीं लेके आ सकते हो तो कोई एक पर्सन आप नहीं लड़ सकता है उस पर्सन से जिसके पास रिसोर्सेज हैं. ठीक है, वो प्रेसिडेंट है एक कंट्री का तो उसके पास रिसोर्सेज हैं. If you want to go against him, you need bigger and bigger allies. Understood? और रशिया आपकी सबसे बड़ी कंट्री है बच्चों. उसके पास ना सिर्फ फोर्स है बल्कि उसके पास बहुत सारी वेपनरी भी है. और you know there is the strongest ally that Russia has. What? What, ma'am? The strongest ally of Russia.
Does anyone wants to actually attack us? No, ma'am. Will anyone wants to attack us? No, ma'am. Understood. You need stronger allies. Yes. Now better is Yes, if you actually are concerned with Russia, go to Russia. Study here. okay, ma'am. One Yes. day your team. One day when you have the power to actually make a difference, go to Russia and talk to Putin. Definitely, ma'am. Yes, right now, write down the next point. Yes. It is, yes, it is because I'll tell you, Gandhi ji was very influential in the freedom fighters. जितने भी freedom fighters थे, उन सबसे ज़्यादा influence जो है गांधी जी का है, ठीक है? भगत सिंह की जो फांसी हुई थी, उसमें माना जाता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर गांधी जी सपोर्ट कर देते, बिकॉज उनकी बेल के लिए दो लोगों के, थ्री बहुत मेजर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्हें हम गरम दल या नरम दल कहते थे, तो नरम दल के 3 मेजर लोगों के सिग्नेचर्स चाहिए थे, और ब्रिटिशर्स ने कहा था अगर नरम दल के 3 लोगों के सिग्नेचर चाहिए थे, और लोगों ने कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम भगत सिंह को छोड़ देंगे अगर आप 3 मेजर फाइटर्स फ्रॉम द नरम दल आप उनका सिग्नेचर अगर ले आए। तो जो पर्सन था जो गरम दल का था, जो उनके पास गया था गांधी जी के पास, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, नेहरू जी ने साइन करने से मना कर दिया, और एक थे उन्होंने भी साइन करने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल थिंक दैट इफ दे हैड साइंड द सिग्नेचर देन Bhagat Singh would have actually been alive. But the thing is, nobody knows what exactly Britishers would have done now. No, ma'am. You have to get signature. Is it 100%? Understood. Yes. The thing is, there is also concept that has not की तरह गुमनाम ही रह जाते हैं. Sometimes negative support, negative motivation is very necessary for the people. Understood? आपको जैसे धमकी दी जाती है ना, अगर आपको धमकी दी जाती है कि मार्क्स काट लिए जाएंगे, अटेंडेंस नहीं दिया जाएगा, तभी सुनते हो ना क्लास में बात. अगर आपको समझाया जाए कि बच्चे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लेते हो क्या बात? Sometimes negative motivation is very much important in your life. That works as a negative motivation for the freedom fighters. Yes, right on the next point. ये point आप लोग सब समझ गए ना? Okay, right on the next one. Nehru ji wanted to get the answers. Nehru ji wanted to get the answers to know KNOW what kind of government will work in Indian freedom. Will work in Indian freedom. So he studied the हाँ बच्चे, पढ़ाई जो आप अभी कर रहे हैं, STUDIET, studied the Soviet Revolution.
सोवियत यूनियन होता है, रेवोल्यूशन, सोवियत रेवोल्यूशन. Soviet Union is a place, Soviet Revolution is a revolutionary action. Soviet Revolution. Yes. So he studied the Soviet Revolution. He came across two major revolutionaries, two major revolutionaries. Do you always write like that, or is it right now? No, ma'am. I was forget my. No, not handwriting. The pen. Is it always like that? Pressure on your forefinger. Yeah. After a few while, you will start having pain in your forefinger. Yes. He came across two of the major revolutionaries, Marx and Lenin. Marx and Lenin. Marx and Lenin. Marx and Lenin. These are the two major revolutionaries who were responsible for the freedom of Soviet Union or formation of Soviet Union. सोवियत संघ बनाने के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है. सोवियत संघ, yes, they gave a very major concept of theory for the formation of government, but their theory failed. Okay, that's exactly how. After this, he was trying to आपने point लिखा, be quiet, is that Nehru ji wanted to know, to get freedom, what kind of government will India be supported? So India is the biggest diverse country that we can find. Any India जैसी diversity आपको कहीं और किसी जगह मिलेगी, and because of that, बहुत सारे freedom fighters वो कहीं और नहीं है. और इंडियन डेमोक्रेसी वाज द फर्स्ट वन ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, वो अपने जैसी पहली एक डेमोक्रेसी थी जब ये 1945 में फॉर्म हुई थी. Understood? So unique freedom which was provided. Even right now, Britishers are not as free. They are still captured because they still praise their king. He wanted to know, Nehru ji and many of the, yes, why are you talking in between? Do you have any question? No. If you are not asking any question, I suppose that you are putting garbage in your friends' ears. So I pray that you don't do that, because that garbage will actually be reflecting in their answers. And I already know that. It will do that. तो आपके जो भी यहाँ फुसर होता है ना, वो उनके आंसर में रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं. तो आप ना करें ऐसा अपने दोस्त के साथ. The real friendship shows when you help them, not degrade them. Yes, so according to Nehru ji, when they, yes, be quiet.
when they were fighting for the freedom, उन्हें उस टाइम तो नहीं पता था कि उन्हें 3 साल बाद फ्रीडम मिल जाएगा, right? In 1945 he was not sure that whenever we are going to get the freedom. So what exactly were they concerned with कि भरोसा था कि आज नहीं तो कल हमें फ्रीडम मिल ही जाएगा। बट इसके अलावा हमारे पास और सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि किस तरह की गवर्नमेंट इंडिया में वर्क करेगी। Why is somebody murmuring and why is your laptop on? Second last page. यहीं बैठ के सोवियत यूनियन का रिसर्च कर रहे हैं। शट इट डाउन। अभी तक कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं सीज कर सकती हूँ आपका लैपटॉप भी। Speak in Hindi. What speaking? He maintained registered in laptop. He maintains register, that is all right, but can't he do that right now in the notebook and then maintain afterwards? Yes, no, Maintain it as a like a register. BBA class. Yes, sir has already told me. Pudar sir has already told you it can be maintained on chart paper. It can be maintained as a register. It can be maintained on the computer itself, but not itself in the classroom while we are teaching here. If you want to maintain that record, you can maintain it in a register, then put it in your system. Okay, it won't take too much time. Yes. As I was saying, Soviet Revolution जब यहाँ पर हुआ था, Soviet Union जब form हुआ था, the exact government that was governing there was regimentation. What do you mean by regimentation? You know that there are different regimentations in our India also, but regimentation only exists in, yes, all the yes. तुम्हें लिस्ट करने नहीं बोला जाता है, हर बार सुनाना शुरू कर देते हो, गोरखा रेजिमेंट तो ये रेजिमेंट, एक बार हाँ कर दो, दैट इज इनफ. You don't have to explain it. I'm standing here to explain you. I need just a yes or no. What exactly do you know? Okay. Yes. Regimentation means that exact battalion of a force. Okay, when it is only terminology that is used in military, not anywhere else. Okay, so basically regimentation government means the militant rule in a country, which we already are. That means he is going to give the commands to everyone else, yes, and his command will be formulated or will be something that is followed throughout the regiment. यानी कि पूरे के पूरे regiment में आपका in command का ही command जाता है, follow करते हैं. The thing is, when one person is responsible for thousands of all, he will only have one point of view for everything. यही रीजन है कि जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का रूल हुआ, यानी कि डिक्टेटरशिप एंड ओनली प्योर जर्मन्स, और यही रीजन है कि वहां से ज्यूस को हटा दिया गया. The thing is that if the regimentation had been in a proper format, not into dictatorship, जितने भी उसके लोअर रीजन थे, लोअर थे, उसके अंडर आते थे, अगर उनसे पूछा जाता कि हम प्योर जर्मनी कैसे बनाएं, तो क्या उनमें से
बहुत सारे लोग ये नहीं कहते कि हम बाकी नॉन जर्मन्स को बाहर निकाल दें, ये रीजन हो सकता था, ये बोला जा सकता था, लेकिन ये रेजिमेंटेशन नहीं था, ये डिक्टेटरशिप था. सो अडोल्फ हिटलर डिड नॉट इवन वांटेड देम टू एग्जिस्ट. The non-Germans, they did not wanted them to exist. That type of constitution, what we can say. Dictatorship. Dictatorship. Yes, dictatorship. There is a dictatorship. Dictatorship means only one person who is under the rule of military, and he is the one controlling the whole regimentation, which is exactly the whole country. जब regimentation form हो जा रही है, तो regiment में हमेशा एक in commander रहता है. Regimentation पूरी country में है, इसका मतलब पूरी country का सिर्फ एक commander और उसका command पूरी country को follow करना होगा. और यही reason था, तो एक person अंडरस्टूड. अगर उसके साथ 4 और लोग होते, 4 में से कोई एक तो ऐसा होता जो जिंदा छोड़ने की बात कहता, जो ये रास्ता उसे समझाता कि हाँ हम बाकी नॉन जर्मन्स को बाहर निकाल देते हैं, वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे. And giving the command, he thought that completely vanishing them is much better option. और उसका revolt कोई कर नहीं सकता because he is the dictator. If somebody is going to revolt, then he is or she is against the country itself, right? अब उसे क्या घोषित कर दिया जाता है जो कंट्री के अगेंस्ट है? देशद्रोही. What is the English of देशद्रोही? Traitor. Terrorist is different. Traitor means जो देशद्रोही होता है, ठीक है? Yes, इसमें भी difference है बच्चे. That's why different terminology is given. So traitors basically were considered those who did not want to follow the dictatorship. And यही region उन्होंने देखा. सोवियत यूनियन में भी हमने ये देखा. Yes, be quiet. सोवियत यूनियन में भी हमने यही देखा कि जितने भी गवर्नमेंट गवर्निंग रूल्स उन्होंने थ्योरीज मार्क्स ने दूर की थी, आफ्टर अ फ्यू टाइम व्हेन द डेवलपमेंट हैपेंड, क्योंकि डेवलपमेंट तो आपके लिए नहीं रुकेगा, जो भी ऑल अराउंड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, वो हो ही रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्क्स थ्योरी फेल्ड इन गेटिंग रशिया इनटू द रेस ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज थे या जो डेवलपमेंट किए जा रहे थे, उसमें रशिया बहुत पीछे रह गया बिकॉज ऑफ द थ्योरीज ऑफ मार्क्स दैट वर फॉलोड बाय द रशियंस. जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी रेजिमेंटेशन, कमांड भी जो लोग हैं आपके डेवलपमेंट में आकर फेल हो गई. Now, Lenin wants to try to modify. लेनिन ने क्या किया? मार्क्स की थ्योरी को मॉडिफाई करने की कोशिश की ताकि जो डेवलपमेंट हुए वो उनका अच्छे से गवर्न कर सके, उसके साथ लेकर समय के साथ चल सके. But even after the Lenin theory became established in the Soviet Union, still it failed because again after few years development happens and World War was declared. Understood? World War. Yes, World War हुआ, डेवलपमेंट हुआ कि वहां पर फेसिज्म, डिक्टेटरशिप, अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स फॉर्म किए जा रहे थे अलग अलग कंट्रीज में. बहुत सारी कंट्रीज फ्रीडम के लिए लड़ रही थी, आपस में भी लड़ रही थी और इंटरनली भी लड़ रही थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट सोवियत यूनियन could not compete with any other country क्योंकि लेनिन की थ्योरी अगेन फेल हो गई. At that times, all countries also try to establish their government. Yes, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये चीज पता होगी, ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ इंडिया पे बल्कि बहुत सारी कॉलोनाइजेशन उन्होंने की थी. अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका तक उनका कॉलोनाइजेशन था, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इंग्लिश इज वन ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हर गवर्नमेंट पर. एंड बहुत सारी कंट्रीज हमसे पहले या हमसे बाद
फ्रीडम ले चुकी थी उस कॉलोनी से, ठीक है। हमसे पहले भी बहुत सारी कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश के अंडर थी, जो फ्रीडम ले चुकी थी, और हमारे बाद भी बहुत सारी कॉलोनीज थी जिनको फ्रीडम मिल गया था। The thing is that in Soviet Union, why exactly Marx and Lenin theory failed? इसका reason ये है that they were concentrated on the problems that are only happening right now. अभी के राइट नाउ जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, ना कि उन प्रॉब्लम्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस में इन फ्यूचर देखे जा सकते हैं। अंडरस्टूड? दैट मीन्स व्हाट? हमारे यहाँ गवर्नमेंट हर 5 साल क्यों चेंज होती है आपको पता है? सो दैट इन 5 years if they are not able to do something, we have the option to change them after 5 years. ठीक है, ये क्यों बनाया गया रूल? ये इसीलिए बनाया गया ताकि अगर हमारे इन फ्यूचर डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं, जिस भी तरह का गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, अगर वो हमारी कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज से बाहर या डेवलपिंग कंट्रीज के रेस में नहीं लेके जा पा रहा है, या उसका जीडीपी इंक्रीज नहीं कर रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज नहीं कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो हम चेंज करने का राइट रखते हैं। और यही रीजन है, ये लर्निंग उन्हें यही सोवियत यूनियन से मिली थी नेहरू जी को, कि हमें पता है कि हमारी कंट्री एक किसी रेजिमेंट के अंडर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमने किसी एक कम्युनिटी को राज करने के लिए दे दिया तो बाकी कम्युनिटीज हमेशा सफर करेंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव द राइट ऑफ एवरी कम्युनिटी पर्सन टू गो इनटू गवर्नमेंट। हमने किसी भी कम्युनिटी के पर्सन को कभी गवर्नमेंट से जाने से इसीलिए नहीं रोका ताकि हर एक कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले। Understood? And this is the learning that Nehru ji got from the Soviet Union revolution, that no other government, that is the government of dictatorship, government of regimentation, government of kingdomization will never work in India. Understood? Yes. Further in the next class.